हेलो एवरीवन, हमने ऑलरेडी रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करना है और नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है इसके बारे में वीडियो बनाया है। और आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और किस सीखेंगे किस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स इसका ऊपर आता है वो सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को हम अगर a से डिवाइड करते हैं बोथ साइड्स को, विल गेट a एलिमिनेट हो जाएगा। सो x² प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। ओके, इस इक्वेशन को, इस फॉर्म को हमने नंबर 1 लिख के रखते हैं। नाउ लेट अस अज्यूम दैट x is equal to alpha and x is equal to beta are the two roots of the quadratic equation. Okay, so what we get from that, x is equal to alpha, this implies x minus alpha is equal to 0, and x is equal to beta implies x minus beta is equal to 0. So x minus alpha का वैल्यू 0 है and x minus beta का वैल्यू 0 है. That means x minus alpha and x minus beta will be the two factors of the quadratic equation. So अगर हम x माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 लिखते हैं तो ये हमें क्या मिलेगा, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको मिलता है x इंटू एक्स स्क्वायर एंड माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स, देन x इंटू माइनस बीटा दैट इज़ माइनस बीटा एक्स, एंड माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा दैट इज़ प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। अब हम इस तरह से हम लिख सकते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, क्योंकि माइनस अल्फ़ा एक्स एंड माइनस बीटा एक्स है तो हमने अगर माइनस को कॉमन ले लिया है तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को हम नंबर 2 इक्वेशन लिख के रखते हैं। तो हमने अल्फ़ा बीटा जो लिया था रूट्स, वो सेम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही लिया था। दैट मीन्स जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है वो सेम इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ 2 वी गेट, दोनों में x² है, सेम है। अब x का कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में है b अपॉन ए एंड इक्वेशन 2 में है माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। दैट मीन्स माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू b अपॉन ए, एंड जो कांस्टेंट टर्म है वहाँ पे है c अपॉन ए और यहाँ पे है अल्फ़ा बीटा। सो वी कैन राइट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का जो कोफिशिएंट्स को है उसको कंपेयर करके लिखा है। इक्वेशन 1 का x का कोफिशिएंट इक्वेशन 2 का x का कोफिशिएंट के साथ इक्वल होगा। इक्वेशन 1 का जो कांस्टेंट टर्म है इक्वेशन 2 का भी कांस्टेंट टर्म्स के साथ इक्वल होगा क्योंकि दोनों सेम इक्वेशन है। सो व्हाट वी गॉट इज माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू b अपॉन ए। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन ए, दोनों का साइन चेंज कर दिया। सो द फर्स्ट रिलेशन दैट इज द सम ऑफ द रूट्स, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब रूट्स का सम है। सो द सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस b अपॉन ए। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन। एंड द सेकेंड रिलेशन, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज equal to c upon a. Okay, so these are the relations between roots and coefficients. And now using these relations we'll solve few questions on this topic. So the first question that you can see is, if 3 is a root of the quadratic equation x² minus 5x plus 6 is equal to 0, then find the value of the other root. तो आपको बताया गया है यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपको एक रूट का वैल्यू बताया हुआ है। वी नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स, वन ऑफ देम इज 3, दूसरा क्या होगा। नाउ इफ वी कंपेयर द अबव इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन वी गेट a is equal to 1, b is equal to -5 and c is equal to 6. Let us assume alpha and beta are the 2 roots and it is given that one root is 3, so we assume alpha is equal to 3. Now we know the relation between the roots and the coefficients of a quadratic equation, that is sum of the roots is equal to minus b upon a. So we'll use this. So sum of the roots यहाँ पे क्या होगा, alpha plus beta. So alpha plus beta is equal to minus b upon a. This implies putting the value of alpha equal to 3, we get 3 plus beta is equal to minus, and value of b is
minus 5. So minus of minus 5 and value of a is 1. So it's upon 1. This implies 3 plus beta is equal to minus of minus 5, that is 5 upon 1, that is equal to 5. This implies 3 plus beta is equal to 5. This implies beta is equal to 5 minus 3. This implies beta is equal to 2. So we got the other root, that is 2. तो इस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिलेशंस बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड रूट्स यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो. विल सी अनदर एग्जांपल where we use these relations. Okay, the second question that we are going to solve today is the roots of the quadratic equation 3x squared plus px plus q is equal to 0 are 3 and 1 upon 3. Then find the values of p and q. तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है जहाँ पे दो अननोन क्वांटिटी है, दैट इज p and q, that you will have to find the values. Okay, so as usual we'll compare this equation with the standard form of quadratic equation that already we did in the previous example. Okay, so you will get a is equal to 3, b is equal to p, and c is equal to q. All right, now let us assume alpha is equal to 3 and beta is equal to 1 upon 3, because the roots are given when we are taking them as alpha and beta, and the values are given 3 and 1 upon 3. We know the relation between the roots and the coefficients, that is sum of the roots equal to minus b upon a. That means alpha plus beta is equal to minus b upon a. This implies putting the values of alpha beta, we get 3 plus 1 upon 3. And what is the value of b? That is p, so it's minus p, and value of a is 3, so it's minus p upon 3. This implies the LCM is 3, so it's 3 into 3 plus 1 upon whole upon 3 is equal to minus p upon 3. Simplify karo, 3 into 3 is 9 plus 1, that is 10 upon 3. So this implies 10 upon 3 is equal to minus p upon 3. So the denominator in this equation are same. So we can eliminate 3 and 3. So we get 10 is equal to minus p, or p is equal to minus 10. Alright, so we got the value of p. Now we know the other relation, that is the product of the roots is equal to c upon a. That means alpha into beta is equal to c upon a. This implies 3 multiplied by 1 upon 3, the roots का value जो दिया हुआ है, is equal to, and value of c is q, so it's q upon a, value of a is 3, q upon 3. This implies 3 multiplied by 1 upon 3, क्या होगा, 3 eliminate हो जाएगा तो 1 रहेगा, so 1 is equal to q upon 3, or q is equal to 3. So this way we find out the unknown values p and q. तो इस तरह से आप रिलेशंस को यूज़ करके इस तरह का प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो. एंड फ्रेंड्स, यू हैव अ क्वेश्चन हियर फॉर योर प्रैक्टिस, जस्ट टू चेक व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो. सो द सिंपल क्वेश्चन दैट इज गिवन इज फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर x एंड -5. अगर आपने वीडियो को अच्छी तरह से देखा है, सो ऑब्वियसली विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो राइट down in comment what is your answer, and you have any doubts or queries, please comment. I will be glad to give you a reply. और इस तरह का वीडियोस आपको इस चैनल में मिलता है, सब्सक्राइब करके रखो, फ्रेंड्स में शेयर करो, that will be helpful for them as well. Thank you for watching.